Hello everyone, welcome back to my channel. Another week, another video. And इस week मैं एक makeup tutorial तो नहीं बल्कि एक makeup look करने वाली हूँ because it's been a long time since I haven't done a makeup look. And let's be honest, there are so many people better on YouTube who can do makeup 1,000 times better than me. I'm more of a vlogger, I'm more of a fashion person. The main purpose of this video is to maybe like tell you guys about some new products that I have been using because थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं पिछले मेकअप रूटीन ट्यूटोरियल से, तो देखते रहिए और मेकअप ट्यूटोरियल शुरू करते हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो मैं कर चुकी हूँ वो है यूजिंग दिस विच हेजल टोनर बाय aymr. आई एब्सोल्युटली लव दिस टोनर. सो मैं मुंह धो के आती हूँ एंड आई जस्ट स्प्रे दिस ऑन टॉप एंड आई लेट इट सिंक इन माई स्किन. इट प्रेप्स योर स्किन, इट क्लीन्स आउट योर पोर एंड इट जस्ट स्मूदन्स आउट योर स्किन. आई फील लाइक विच हेजल आई हैव बीन टोल्ड इज वेरी वेरी गुड बिकॉज इट हेल्प्स विद एक्ने. अगर आपकी स्किन पे एक्ने है देन आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई. सो आई हैव put that on my face and now it is time for the foundation. Okay, foundation का सीन थोड़ा अजीब सा चल रहा है आजकल. I feel like a lot of foundations that I have are really yellow on me and ये मैंने सारे foundations समर के टाइम पे लिए थे जब मैं अपनी ट्रिप से वापस आई थी. So obviously I was a little tanned. So this is the only foundation जो कि थोड़ा सा मैच कर रहा है मेरी स्किन को and it is the Lancome tient Idol Ultra Wear Foundation and it looks like this. ये मैंने अपने भाई से मंगवाया था जब वो कनाडा से आ रहा था. सो आई रियली लाइक इट. थोड़ा सा महंगा फाउंडेशन है बट इट इज़ सो गुड फॉर योर स्किन. ओके, मैंने वाइट कपड़े पहने हुए हैं सो आई हैव टू बी लाइक सुपर केयरफुल विद दिस फाउंडेशन. इस फाउंडेशन की कवरेज बहुत अच्छी है और आई थिंक ये फाउंडेशन बहुत थिक भी है. सो इफ़ यू वांट लाइक अ गुड कवरेज देन दिस फाउंडेशन इज़ वेरी गुड. I don't really need a lot of coverage. मुझे इतने heavy coverage foundations पसंद नहीं है because I think they can be a little heavy on the skin. But this doesn't feel heavy, it feels very light. और अगर आपका foundation बहुत heavy है and you want to make it lighter, then you can use it with the Body Shop's Drops of Youth. I love this thing. मैं ये पता नहीं कितने सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ. मैंने 3 bottles शायद ख़त्म कर ली हैं इस चीज़ की. And I'm just going to put the drop. इसके अंदर hyaluronic acid है which is very good for your skin. The main purpose of hyaluronic acid is to plump up your skin. तो अगर आपकी skin बहुत down feel कर रही है या dry feel कर रही है या patchy feel कर रही है, then mix your foundation with a little bit of hyaluronic acid and that I think will really plump up your skin. Always remember to stretch the foundation down to your neck. मैंने इतनी लड़कियों को देखा है जो अपना foundation सही से blend नहीं करती and I think that is a disaster. Like I am not a makeup artist. I know कि अगर foundation unblended हो तो कितना घटिया लगता है. So make sure you blend your foundation well. You stretch it out to your neck ताकि even skin tone लगे. इतना अजीब से लगेगा ना अगर आपका face एक कलर का और आपकी neck दूसरे कलर की है. Very embarrassing. So yeah. Dries really like ऐसा लगे जैसे I don't have anything. It's super thick but when I touch my skin it doesn't feel like I have foundation on. So I love that. और अगर किसी को shade मालूम करना है then this is in the shade 140 Ivory. ये एक्चुअली पाकिस्तान में मिलता है. डेबनहम्स में लैंकॉम का काउंटर है एंड आई बिलीव शायद सेंसेशंस पे भी हो. नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस LA Girl Pro कंसीलर एंड दिस इज़ द बेस्ट कंसीलर आउट देयर गाइज. अगर आपको लिटरली अंडर आई एरिया और अपनी एक्ने को छुपाना है यू शुड गेट दिस कंसीलर. बहुत ज़बरदस्त कवरेज है इस कंसीलर की. इट stays on for very long and अगर आपकी skin अच्छी है and you don't want to use a foundation, just get this concealer because this concealer is fine. Usually on days when I don't feel like wearing foundation I would just use this concealer and honestly it is as good as a foundation. और foundation obviously थोड़ा महंगा होता है compared to concealers. This concealer is pretty cheap, I think less than 1,000 rupees, which is a very good deal for a concealer. Also it lasts you very long. ये है natural में and इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे शेड्स भी हैं. सो लाइक यू कैन आई एम श्योर फाइंड योर शेड हेयर. ऑल राइट, पाउडर के लिए आई एम यूजिंग दिस गोल्डन रोज ट्रू मैट प्रेस्ड पाउडर. और जो ब्रशेस हैं ये एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पेज से लिए थे बट मिनीसो हैज़ रियली नाइस ब्रशेस. सो इफ़ यू हैव अ मिनीसो नियर वेयर यू लिव यू कैन गो टू मिनीसो एंड ट्राई द ब्रशेस. दे हैव बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत सॉफ्ट है. अच्छा, इसका शेड है 60 and I really like this powdered compact powder. इसकी coverage बहुत अच्छी है. Again it gives you a very nice
फिनिश ऑन द स्किन एंड आई लाइक मेकअप जो कि नेचुरल लगता है. आई डोंट लाइक केकी लुक ऑफ मेकअप. जब आप किसी को देखें और आप देखें उसके मुंह पे इतना सारा मेकअप लगा हुआ है, आई जस्ट डोंट लाइक दैट. लाइक आई नो कि कुछ लोगों को पसंद है makeup lagana and I'm not bashing anyone. You can put as much makeup you want, but I personally like a more natural looking makeup. So blush ke liye I'm using this lip and cheek tint stain which is a travel size by aymr और इसका इसके अंदर बीटरूट है, so that's where it gets its color from. aymr एक Instagram page है जिनके पास organic skin care and makeup है. So if you want to check it out, मैं उनका link नीचे डाल दूँगी and you will be able to. So I'm just gonna take this on my face like this और हल्का हल्का करके I think blend करना चाहिए because sometimes these tints can get really crazy. But look how lovely that look. It looks so natural. Beauty tints में माना के भी बहुत अच्छे हैं. I don't know how you pronounce it, माना, but they have some really nice tints as well. बट उनके टिंट्स मुझे थोड़े से मुश्किल लगते हैं इस्तेमाल करना बिकॉज देयर जस्ट सो इंटेंस. एक में इतना सारा आ जाता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मुझे अपना मेकअप धोना पड़ता है. बट देयर वी गो. आई थिंक आई एम हैप्पी विद दैट. आईब्राउज के लिए आई एम यूजिंग दीज टू थिंग्स. एक तो है ये लशेस का ब्राउ लक जो कि मैं पता नहीं कितने सालों से इस्तेमाल करती आई हूँ एंड आई एम श्योर यू गाइज आर सिक ऑफ हेयरिंग अबाउट इट. बट आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ द ब्रश दैट कम्स इन दिस थिंग एंड आई एम गोइंग टू कोम माई आईब्राउज. I like slightly unruly eyebrows, like थोड़ी सी ऊपर से बाल निकल रहे हों. I think it looks natural and it looks nice. और उसके ऊपर I'm going to use this golden rose brow color tinted eyebrow mascara. अच्छा, सीन ये है कि ये थोड़ा सा लाइट है मेरी eyebrows के लिए. My eyebrows are slightly darker, but that's okay. I am okay with that. I'm just going to lightly brush it and this makes my brows look so incredibly thick and long. I love it. It would be great. I want to get something which is a bit closer to my eyebrow color. जैसे अभी थोड़ी सी ashy लग रही है, which I don't mind that much, but it would be great if I can find something which is the color of my brows. I think ये brown color में है. Yeah, this is a 01 in the shade 01. So I think darker colors would be in another color. ऑल राइट, फेस कॉन्टोर टाइम. उसके लिए मैं ये पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ और दिस इज़ द मोस्ट वांटेड कॉन्टोरिंग पैलेट बाय आर्टडेको. मैं ये मोटा सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर के लिए विच आई वुडंट रिकमेंड बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल होता है. बट आई एम ओके विद यूजिंग दिस ब्रश. ज़्यादा हैवी नहीं करना है, मुझे बहुत लाइट सा चाहिए. And now that I'm seeing myself up close, I think कि थोड़ा सा पैची है मेरा blush, तो I'm gonna redo that because obviously I can't see. मेरा मिरर बहुत दूर है. थोड़ा guess work चल रहा है इस makeup tutorial के अंदर, which is not a tutorial, it's just to get ready with me. By the way, here we go. Done. I am just going to fix the blush. I think इस वाली side पे थोड़ा सा uneven है, so I'm just gonna do that. That looks a lot better. Okay, eyes पे I'm going to use this very old make eyeshadow palette क्योंकि मुझे अपनी eyes बहुत natural रखनी है. कोई बहुत hi-fi event पे मैं नहीं जा रही हूँ कि मुझे बहुत सारे मेकअप की ज़रूरत है. So this is the Heaven and Earth palette and I think this was my first ever eyeshadow palette. और उस वक्त से इस वक्त तक बहुत चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं. आई स्टिल ग्रेविटेट टूवर्ड्स नेचुरल लुकिंग कलर्स बिकॉज दैट्स जस्ट माई मेकअप प्रेफरेंस. मेकअप अकेडमी के आई शेडोज़ आर वेरी गुड. अगर आप लोग ने इस्तेमाल नहीं किए देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज कि आप इस्तेमाल करें. दे आर वेरी गुड क्वालिटीज़. दे आर चीप. लाइक आपको आई थिंक ये पैलेट जब मैंने ली थी जिस ज़माने में, आई थिंक उस वक्त 2012 चल रहा था और उस वक्त ये पैलेट आई थिंक 1100 रुपये की थी. सो कंपेयर टू अदर ब्रांड्स काफ़ी सस्ती थी. सो आई थिंक अब ये शायद उतनी हो, थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई तो शायद प्राइस थोड़ी बढ़ गई हो, बट आई थिंक इट्स अ गुड पैलेट. ये मैंने जस्ट फॉर गर्ल्स से ली थी. आई हैवंट शॉप्ड from Just for Girls in so long. If you have bought something from Just for Girls, let me know because मैंने पता नहीं कितने टाइम से कुछ नहीं खरीदा है वहाँ से. And I remember I had no like pocket money भी नहीं होती थी. अम्मा से बैग कर करके पैसे लेने पड़ते थे. And I would like order makeup. अपनी ईदी जो बचती थी मेरी, like ईदी पूरी की पूरी मेकअप खरीद के मैं उड़ा देती थी. So that was me
back in 2012 when I had no money and I survived on Eid. Good times. बहुत ही earthy shades हैं इस palette के अंदर, as the name suggests, heaven and earth. And I think it's a perfect palette अगर आप beginner हैं और आपको मेकअप करना इतना नहीं आता है, या फिर आप आई मेकअप इतना पसंद नहीं करते और just like हल्का फुल्का सा थोड़ा सा मेकअप कर लिया, then I think this eyeshadow palette is very very good for you because इसके अंदर बहुत ही natural colors हैं. I'm going to take a shimmery color and just put it in the middle. There we go. I think that looks pretty decent. Now comes the tricky part, और ये part है eyeliner. Eyeliner अगर आप शीशे में बगैर देखे लगा रहे हैं, it's very tricky. और अगर आप लगा सकते हैं, then you have a superpower. Because मुझसे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है. The eyeliner that I'm using is a Sweet Touch London वाला, और छोटा सा liner है, very very nice. अब I think अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, but I am still pushing through. Not bad. चांस पे लगता है लाइनर जी. डांस पे चांस कर ले. Okay, now it's time for eye number 2. Wish me luck. I think I did a pretty good job. Oh my god. Okay, I have never gotten my liner so good on camera before. Pat on the back for that. Like one thing जो कि मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ वो है ये आई पेंसिल, एंड दिस इज़ एक्चुअली स्वीट टच का काजल पेंसिल, एंड ये शार्प कर सकते हैं आप. सो दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग जो आप शार्प कर सकते हैं. बट आई लव दिस. जस्ट लुक एट दिस. मैं ये लगाती हूँ अपनी वाटर लाइन पे, एंड दिस जस्ट आई लव काजल. फन फैक्ट, जब मैं छोटी थी आई वुड पुट इतना सारा काजल, मैं लिटरली यहाँ तक काजल लगाती थी. इट वॉज सो बैड. मैं जब भी अपनी पुरानी तस्वीर देखते हैं, I'm like, oh my god, Anushae, what were you doing? You looked horrible. But yeah, अब हल्का सा water line पे, and I think it finishes off the look really well. So, if I could give myself advice, बचपन की अनुषे को काजल पे हल्का हाथ रखो. I think that would be my advice. Okay, mascara. I'm using again Golden Rose का Maxi Curl mascara. I'm using a lot of Golden Rose. Wow. Golden Rose is apparently a good brand because I use a lot of Golden Rose. Okay, I'm just gonna use their mascara, and I am really liking their mascara. I think थोड़ा सा clumpy है ये, but I like clumpy mascaras. I mean, that's just me. अगर आपको clumpy mascaras नहीं पसंद, then try Maybelline. Their mascaras are so good. Okay, I think my lashes look bomb.com if I do say so myself. Now it is time for highlighter, and उसके लिए I'm using this Beauty Treats Artistry Basic Face Palette, जो कि मैंने Beauty Joint से ली थी. Beauty Joint एक वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान शिप करती है. They have a whole lot of international brands. सस्ती वेबसाइट है, it's not expensive. They have drugstore sort of brands. So this was not that expensive. I think ये $15 की थी, और इसके अंदर टन इतनी सारी चीज़ें हैं. So it comes with bronzers, blushes, and 8 highlighters, which I think is pretty darn good. So I'm going to use a highlighter because blush तो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ. Oh, and which highlighter should I go for? I think I'm going to go for Ibizia. I really want to go to Ibizia, guys. It's in Spain, and it's a beautiful place, and I haven't been there. So अगर आप स्पेन से हैं और आप पाकिस्तानी हैं, then आप मुझे बताएं कि अगर वहाँ पे लोग इबिजिया को इबिजिया बोलते हैं या फिर एबिजिया बोलते हैं, बिकॉज आई थिंक वहाँ पे ज को वो TH कर देते हैं या स को TH कर देते हैं. लाइक अलीशिया इज अलीसिया. सो आई रियली वॉन्ट टू नो if it's Ibizia or if it's Ibizia. Ibizia. And if I'm saying it right, because I'm not sure. I'm going to line my tiny lips with this lip liner, and it's a really pretty pink color. Like a rosy pink, which is the name of the liner. Okay, lip liner is on, and now it is time for the lipstick. And the lipstick is Color Studio Professional की Heartbreak
Heartbreak. And guys, this lipstick, just look at this. It is the yummiest lipstick ever. Like I could eat this, but I won't because it's a lipstick. मगर बहुत मजे का कलर है ये. I love this color. It won't last you very long because I think matte lipsticks last you longer. But अगर आप इसको थोड़ा सा टिश्यू से पैक्ड कर लें and you make it like less velvety, it's gonna last you. Look complete. Let's take this band out. There you go. That is the finished look. And I am now going to head out. I am really happy with how the eyes turned out. And yeah, that's the finished look. अगर आप चाहें इसके ऊपर आप फिर से टोनर कर लें, मैं कभी कभार कर लेती हूँ. I don't know if it's recommended or the beauty gurus are probably like इसको मारो क्या बोल रही है, but that's how I do it. या फिर आप obviously makeup setting spray यूज़ कर सकते हैं. Artedco का बहुत अच्छा है, Makeup Revolution का अच्छा है. I don't use it that much because I feel like कि वो थोड़े मेरी स्किन को ड्राई करते हैं and it's already like dry enough. That's the finished look. I hope you enjoyed it. I hope आपको कोई नए प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात हासिल हुई हो इस वीडियो को देखने के बाद. And if you have any questions regarding the products, I will mention everything in the description box so that ज़्यादा से ज़्यादा questions आपके आंसर हो जाएं. And now I will soon see you in my next week's video. So till then, bye. Oh, and also subscribe to my channel.